Hello, my dear students. In any given moment, we have two options to step forward into the growth or to step back into the comfort zone. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. So let's step forward into one more interesting topic, and the topic of today's discussion is dictionaries in Python. The last session we have seen like dictionaries को create कैसे करेंगे, उसको travels कैसे करेंगे, as well as उसके अंदर elements को add कैसे करेंगे, delete कैसे करेंगे. All basic properties of dictionary we have seen, we worked on to them through the coding, and अभी उसी confidence से we'll be moving into the discussion about built-in functions of dictionaries. So let's see first theoretically what are the different built-in functions, and then one by one उनको implement करके crystal clear करेंगे. So this is the first set of functions. इसको पहले हम लोग theoretically discuss करेंगे, पाइचाम में जाके इसके साथ काम भी करने वाले हैं, and then next slide के ऊपर के functions को touch करेंगे. So my complete focus at this moment is on the 6 functions and it's working through PyCharm. उसके बाद आगे के functions हम लोग देखने वाले हैं, right? The name of the function suggests few things about it, right? So यहाँ पे clear function definitely is going to clear the entire elements or entire items from the dictionary, right? Next to that copy. अगर आपको existing dictionary का copy करके एक नया dictionary बनाना है तो we can go on using the copy function onto the dictionaries. नेक्स्ट फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेशन में उसको देख चुके हैं, पर यहाँ पे इसको एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं. फॉर एग्जांपल वन डिक्शनरी इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड आपको सिर्फ उसके अंदर की का लिस्ट चाहिए. सो कीज फंक्शन अगर यूज करते हो तो यू विल बी एबल टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज. सो जितने भी कीज है उसका लिस्ट के रूप में रिटर्न होंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट कीज फंक्शन. Similarly, अगर आपको सारे के सारे values चाहिए in the form of list, you can go on using the function as what? Values. So ये values is going to return the list of all the values in the dictionaries. तो हम लोग दो अलग अलग list में इसको बांट सकते हैं dictionary को. One is the list of keys, other one is the list of values with the help of keys and values function. Right? Individual अगर element का value देखना है key के through, so we can use get function also. So get function के अंदर parenthesis में you can specify the key. Get function is going to return the value of a specified key. बहुत ही interesting function है. And followed by that last thing that is items. यहाँ पे individual keys देखें, यहाँ पे individual values देखें. अगर आपको key value pair एक साथ चाहिए तो उस केस में you can get a list, and इस list के अंदर what you are going to get is a tuple which consists of each key value pair. So item function जो है that is going to give us the list which consists of tuples. So tuples का list, and हर tuple के अंदर you will be finding the key and value pair. So let's go on checking how this function works. First one is clear, copy, next is keys and values, and the next one is get as well as items. And ये चेक करके वापस यहाँ पे आएंगे, अगले फंक्शंस देखेंगे, उनको भी वापस चेक करके क्रिस्टल क्लियर करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म टू चेक इट आउट हाउ दिस फंक्शन वर्क्स. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is let's go on creating one Python program, and यहाँ पे I'll go with, let us say, demo 56, and this time I'll be putting the title as built-in functions of dictionary, right? So let's go on creating first one dictionary. Define करते हैं. पहला element I will be keeping it as a name, and the value is, let us say, Rohit. Next is I'll be moving towards next key as age, and उसका value रखते हैं, let us say 36, and comma करके I'll be going towards next as roll number, and उसका value रखते हैं, let's say
14. सो ये अपने पास डिक्शनरी है एंड उसको चेक भी कर सकते हैं प्रिंट करके, एंड व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी the corresponding dictionary mentioned with the help of curly brace pair, and each item is a key value pair, and heterogeneous elements का collection हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं. So let's see, like, can I use a copy function to copy this dictionary into another one? So I'm just saying d2 is equal to d1 dot copy, and यहाँ पे अगर मैं print करता हूँ d2, so I should get a exact copy of d1. So let's see. प्लीज सी सिंपलेस्ट वन, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का कॉपी अगर आपको करना है तो उस डिक्शनरी के ऊपर कॉपी फंक्शन कॉल कर दो एंड रिटर्न किया हुआ डिक्शनरी किसी और वेरिएबल में सेव कर लो, राइट? सो दिस इज हाउ द कॉपी फंक्शन वर्क्स. नेक्स्ट टू दैट, इफ आई वांट टू गो विथ, लेट मी गो ऑन फर्स्ट, ये डिवाइडर एक लेते हैं. हाँ, अभी हम लोगों को देखने हैं की एंड वैल्यूज. सो कीज एंड वैल्यूज का लिस्ट हम लोग ले सकते हैं या नहीं, राइट? सो यहां पे मैं कर रहा हूं की लिस्ट एंड आई एम जस्ट सिंपली सेइंग दैट d1 डॉट कीज एंड चेक करते हैं व्हाट आई एम गेटिंग दिस एज ऑल द कीज आर, एंड यहां पे कॉमा करके आई विल बी सिंपली सेइंग की लिस्ट एंड चेक करते हैं कीज का लिस्ट हम लोगों को मिल रहा है या नहीं. एंड हियर this dictionaries के सारे keys are and given, please observe, in the form of list, that is name, age as well as roll number. So let's see now how we can go on getting the values का भी list, and here I'll simply copy this and paste it over here. So value list देखते हैं, value list, and यहाँ पे how I can get it, d1 dot वैल्यूज नाम का फंक्शन उसके ऊपर काम करेंगे, एंड सो यहाँ पे प्रिंट ऑल द वैल्यूज आर, राइट? ओके, एंड यहाँ पे विल गो विद वैल्यू लिस्ट, सिंपल वन. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि सारे के सारे वैल्यूज अभी हम लोगों को मिल रही है या नहीं. यस, कीज था नेम, एज एंड रोल नंबर, वैल्यूज थे रोहित 36 एंड व्हाट 40. So very nicely we could be able to retrieve only keys as well as only values. So now let's see how the get function works. अगर किसी की के ऊपर उसका वैल्यू क्या है ये आपको देखना है तो सिंपली यू कैन गो ऑन यूजिंग व्हाट गेट फंक्शन. कैसे करेंगे प्लीज ऑब्जर्व. सो यहाँ पे आई विल सिंपली गो विथ प्रिंट एंड d1 डॉट गेट. डिक्शनरी के अंदर से मुझे गेट करना है एक एलिमेंट जिसका की है नेम. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट व्हाट इट गिव्स मी. सो ऐसा मुझे वैल्यू चाहिए जिसका की इज व्हाट नेम. आई वांट टू गेट अ वैल्यू ऑफ आइटम वेयर द की इज नेम. सो लेट्स सी नेम का वैल्यू क्या है, एंड नेम का वैल्यू इज व्हाट रोहित. Fine. So here I get to know like how this keys as well as values as well as the get function works, right? So now keys ने मुझे keys दिए, values ने मुझे सारे के सारे values दिए, get ने जो key mention किया उसका value दिया. If I want to get a entire item, so can I get it? Yes. And for that purpose we have items, or I'm saying item list, and यहाँ पे will be using d1 के ऊपर will be using the function as what items. And let's go on printing this with the help of print, and यहाँ पे we'll go with item list. So let's see like what item list shows to us, right? So this item list gives us a list, and this list consists of a tuple, and her tuple में key value pair है. Please observe. How I can say that it's a tuple? Because it's given to you in the form of what? Curly brace pair. So items function returns a list which consists of tuples of each key value pair. So name Rohit, age 36, roll number 14. ये हम लोगों को list के अंदर मिला है in the form of what? Tuples. So this is how copy function works. Then keys, then items, then get, as well as values function works, right? Now let's see like how clear function works, and यहाँ पे I'll be simply saying d1 dot clear, and then I'm just printing the d1, and let's see like what's the effect of this. So after clearing, obviously there should not be any element inside the
डिक्शनरी एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व दैट दिस इज द एम्प्टी डिक्शनरी. So I hope कि first 6 functions, that is clear copy, keys values, get as well as atoms, this is very clean and clear. आपकी मशीन के ऊपर भी आपने जरूर करके देखा होगा. Now let's move into the further functionality of the dictionaries and उसको theoretically पहले चेक करेंगे and वापस पाइचाम में उसको एग्जीक्यूट करके भी क्रॉस चेक करेंगे. So after finishing these functions, let's move into the next one, that is very interesting set of functions. So first function under this is a form key function, and inside the form key function we are going to create a dictionaries. यहाँ पे dictionary create होगा when we are specifying what keys as well as value. बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है. यहाँ पे वैल्यूज ऑप्शनल रहते हैं. ऑल दोज थिंग्स वो कैसे करना है, इस फंक्शन को यूज करने के बाद डिक्शनरीज कैसे क्रिएट होंगे, ये हम लोग उसका एग्जीक्यूशन करके देखने वाले हैं. राइट. नेक्स्ट टू दैट हम लोगों ने डिक्शनरी में एक की वैल्यू पेयर को ऐड करके देखा पिछले कोड में. तो यहाँ पे वी कैन गो ऑन अपडेटिंग द डिक्शनरी with the help of function known as update. So this is the another way of adding new items into the dictionaries. Next to that, next very interesting function is set default, and this is going to return the value of specified key. ये हम लोगों ने किसके साथ लिया था, ये हम लोगों ने get function के साथ लिया था. But now in this case set default is अगर वो की आपके डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, so this is going to insert that particular key and value pair into the dictionary if the key is not present. So if the key does not exist, जिसका आप वैल्यू लेना चाहते हो वो की है ही नहीं, राइट, तो इट इज गोइंग टू इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई द फंक्शन इज सेट डिफॉल्ट. एंड अगर की प्रेजेंट है तो जो भी की का वैल्यू है दैट इट इज गोइंग टू रिटर्न, एंड इन दैट केस आपने जो डिफॉल्ट वैल्यू दिया है दैट विल बी इग्नोर्ड. राइट. नेक्स्ट टू दैट द फंक्शन इज पॉप एज वेल एज पॉप एटम. ये फंक्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे, पर यहाँ पे भी एक बार फिर से करके देखेंगे. पॉप आइटम इज गोइंग टू रिमूव द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर. जो डिक्शनरी में लास्ट इंसर्ट किया वो फर्स्ट रिमूव करे गए पॉप आइटम्स के साथ एज वेल एज. एंड अगर आपको किसी भी की का वैल्यू देके कोई आइटम्स को डिलीट करना है तो सिंपली यू कैन गो ऑन यूजिंग व्हाट पॉप फंक्शन. So let's move into the PyCharm to check out like how form keys, update, set default, pop and pop item works. So let's move into the discussion about the newly discussed functions. What we are going to do is ये पहले जो functions हम लोगों ने discuss किए थे उसको comment में रखते हैं, and यहाँ पे अभी we'll be discussing the newly theoretically discussed functions, right? So let's go on creating first some keys as well as some values, and फिर हम लोग use करेंगे a specific function as from keys, right? So यहाँ पे what we'll do is let's go on creating one set of keys, and यहाँ पे I'll go with key 1 comma करके I'll go with key 2 comma करके I'll go with key 3, and यहाँ पे उसका वैल्यू के लिए y is equal to let's say what 0, and यहाँ पे I'll be creating this dictionary with the help of from keys, and यहाँ पे specify करेंगे x as well as y. इससे जो नया डिक्शनरी बनेगा let's collect it into the d1 variable and चेक करते हैं इसका टाइप. सो प्रिंट टाइप ऑफ d1 एंड इसके बाद d1 को भी प्रिंट करेंगे. सो हमको पता चलेगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर अस. So let's see, let's run the code and check it out.
So it says that key 1 value 0, key 2 value 0, key 3 value 0, right? So यहाँ पे separate keys दिए, separate values दिए, and this goes on creating what? One dictionary for us. So can we go on providing the values? एक value देने की जगह पे हम लोग अलग अलग value specify कर सकते हैं क्या? So I'm just specifying like this, and let's run the code and check it out कि can we get this? And यहाँ पे please observe ये वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? की 1 के लिए वैल्यू मिल रहा है 11, 22, 33, की 2 के लिए वैल्यूज मिल रहा है 11, 22, 33, मतलब हर की के लिए दिस पर्टिकुलर वैल्यू गेट्स डुप्लीकेटेड इनटू इट, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज विद। एंड नाउ अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दिस सेकंड पैरामीटर इनटू द फ्रॉम कीज, एंड यहाँ पे चेक करते हैं कि what values it is going to assign to the particular key, and very interesting, the value assigned is what? None. So जो second parameter है that is optional because function का नाम ही है from keys. So you go on providing the keys, and if you are not providing the values, then definitely those values will be treated and considered as what? None. So I hope कि from keys function is very clean and clear to you. Now let's see the next function, that how we can go on updating the dictionaries by adding certain elements into it. So उसके लिए हम लोगों को एक dictionary create करना पड़ेगा. So what I'll do is I'll comment on to this, and यहाँ पे एक नया dictionary बनाते हैं. So I'll go with D1 is equal to डिक्शनरी के लिए first is let us say name, and name के लिए value I'm just using it as let us say Prasad, and comma करके I'll be going with marks and colon let's say 96. This is the dictionary with 2 items into this, and let's go on printing the present dictionary, that is what? D1. And then हम लोग इसको अपडेट करेंगे by adding certain values, and फिर चेक करेंगे कि can those values get added into this. So फिर यहाँ पे यूज करेंगे d1 dot update, and इस अपडेट में हम लोगों को values देने पड़ेंगे. Let's see, like I want to give the value as let us say email, and email की है and उसका value is let us say prasad@gmail.com, and ये डिक्शनरी अभी D1 अपडेट हुआ है या नहीं, इसकी वैल्यू से उसको चेक करते हैं. So I'll just simply go on printing D1 again, and when I run this, please observe. So here earlier dictionary is having only 2 items, that is name Prasad marks 96, and जैसे मैंने उसको अपडेट कर लिया, so I'm able to say like email and prasad@gmail.com, ये उस डिक्शनरी में ऐड हो चुका है. So this is one another way through which we can go on adding the items into the dictionaries. Now let's move into the next function, that is set default, and इसके लिए हम लोग यही डिक्शनरी को यूज करने वाले हैं. So let's see, like यहाँ पे मैं अपडेट के लिए कमेंट कर रहा हूं, and now let's run the existing dictionary code, and I have 2 elements into it, that is name Prasad and marks is what? 96. So if I want to get any value from certain specified key, तो हम लोगों ने get function का working देखा है, और यहाँ पे और एक function को check करना है. Let's say like how this works. set default function को use करेंगे. Suppose मुझे name के साथ यहाँ पे comma करके I am specifying रोहित, तो मैंने यहाँ पे एक नेम वैल्यू पेयर दे दिया नेम एंड रोहित. अगर नेम नाम का की मेरे डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो ये दिस की एंड दिस करस्पॉन्डिंग वैल्यू विल गेट एडेड. अगर नेम अपने डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा. लेट मी कलेक्ट दैट वैल्यू इनटू सम ऑफ द वेरिएबल लेट अस से x, एंड मैं अभी इस x को प्रिंट करके चेक करता हूं. सो यहाँ पे मिलना चाहिए व्हाट? प्रसाद. एंड उसके बाद अगर आप डिक्शनरी को वापस प्रिंट करके देखोगे, सो डिक्शनरी शुड बी रिमेन एज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन. तो यहाँ पे ध्यान से देखना है. सो इस सेट डिफॉल्ट ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए. सो यहाँ पे नेम प्रसाद मार्क्स 96, वी मेंशन D1 ऑन सेट डिफॉल्ट नेम एंड रोहित, और एक पेयर दे दिया. सो ये चेक करेगा कि ये नेम नाम का की प्रेजेंट है क्या.
अगर वो की प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज गोइंग टू ऐड दिस की वैल्यू इनटू द डिक्शनरी, वो भी चेक करके देखेंगे. सो लेट्स सी लाइक हाउ दिस गोज विथ. तो यहाँ पे आई विल बी स्पेसिफाइंग d1 इज इक्वल टू d1 डॉट, हम लोग करेंगे व्हाट, सेट डिफॉल्ट. एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ द न्यू एंटिटी दैट इज लेट अस से ईमेल, कॉमा करके यहाँ पे करेंगे prasad@gmail.com. एंड यहाँ पे x में उसका वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू d1. एंड नाउ लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग दिस x अगेन and followed by print this d1 again, right? So now let's see like what is going to happen. सेट डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर की वैल्यू पेयर तो आपने दे दिया, तो ये चेक करेगा कि ये की दैट इज ईमेल इज इट प्रेजेंट इनटू द डिक्शनरी. अगर वो नहीं है तो उस केस में ये की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा अपने डिक्शनरी में एंड देन इसका वैल्यू रिटर्न करके एक्स में आना चाहिए. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट दैट हाउ दिस वर्क्स. एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू आ चुका है prasad@gmail.com, ये वैल्यू, जबकि वो वैल्यू डिक्शनरी में था ही नहीं. तो इसने चेक किया ईमेल नाम का की है क्या नहीं, ईमेल नाम का की इज नॉट देयर, सो इट हैज एडेड दिस की एज वेल एज वैल्यू. दिस इज हाउ दिस सेट डिफॉल्ट फंक्शन वर्क्स. अगर वो की वैल्यू आपके डिक्शनरी में है तो यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर आपने पास किया है दैट विल बी इग्नोर्ड. एंड अगर वो की वैल्यू नहीं है so this key value pair will be added and उसका value will be returned. This is how this set default function works. Now अपने पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर तीन तीन आइटम्स हैं. एंड नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर अस फॉर पॉपिंग द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी. ये पहले भी पिछले वीडियो में कर चुके हैं बट यहाँ पे एक बार वापस उसको इंप्लीमेंट करेंगे. सो लेट मी पुट अ सेपरेटर ओवर हियर एंड उसके बाद पॉप फंक्शन को यूज करके देखेंगे. विच इज द लास्ट आइटम दैट हैज बीन एडेड इनटू दिस डिक्शनरी इज ईमेल. सो अगर मैं ऐसे करता हूं कि इफ आई गो विद d1 डॉट पॉप आइटम देन यू विल फाइंड दैट डिक्शनरी में कुछ मॉडिफिकेशन हो चुके हैं. जो लास्ट आइटम मैंने ऐड किया है वो जरूर रिमूव होगा. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट हाउ दिस वर्क्स. एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व नाउ ईमेल इज नो मोर देयर, आई हैव ओनली नेम एज वेल एज मार्क्स. अभी अगर मुझे इन दोनों में से एक स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करना है डिक्शनरी से बाय स्पेसिफाइंग द की, तो उस केस में मैं यूज कर सकता हूँ पॉप फंक्शन एंड देन से देखना है कैसे उसको यूज करना है. सो व्हाट आई विल डू इज लेट्स गो ऑन पुटिंग द सेपरेटर अगेन ओवर हियर एंड फिर करेंगे d1 डॉट पॉप एंड यहाँ पे नेम जिसका की है वो आइटम मुझे रिमूव करना है. उसके बाद प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को एक बार फिर से एंड यहाँ पे रन करके चेक करते हैं. एंड प्लीज ऑब्जर्व नेम रिमूव हो चुका है, अपने डिक्शनरी के अंदर सिर्फ बचा है व्हाट, मार्क्स. So this is how this function works and this is a very genuine one to understand how the dictionary's built-in function works. So from keys नाम का function देखा, update function देखा, यहाँ पे set default देखा and pop items as well as pop. So this is entire list of built-in functions of dictionaries. So I hope कि now you are very confident on using all the built-in functions across dictionaries. That's it from my side about this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.